a altitude of 40 degree 20 minutes. During evening twilight at LST, local sidereal time, 3 hours 34 minutes and 24 seconds, the same star bore north with a altitude of 13 degrees 08 minutes. Identify the star. Now, before we start solving this question, uh, I would like to explain to you the basic concept or the basic procedure which we follow in all these celestial navigation based question. Now, the basic thing to be done is number one, draw the rational horizon diagram. Whenever you get such a question based on principles of navigation, you draw the rational horizon diagram. And in that rational horizon diagram, you try to fit in all the required information which is given to us. So whatever information is given, a particular celestial body, its bearing, its altitude, or any other information, we try to put in that particular diagram. Now, as we put all this information in the rational horizon diagram, the diagram itself tells us or leads us to the solution of the question. In most of the cases, the question can be solved using spherical trigonometry. You will have a PZX triangle formed, and you can use the spherical trigonometry cosine formula or Napier rule. One of them will be applicable in that triangle, and by applying these formula, you will be able to solve the question easily. So this is the basic concept which we use. Make the rational horizon diagram, put all the information what is given to us in the question, and we will get a lead from the diagram itself how the question needs to be solved. Either it will be a very simple calculation, just adding or subtracting some values, or it will be a solution of the PZX triangle using the cosine formula or the Napier rule. Now let's try to check this concept, whether the concept works or not in this particular question. Let's fit these things one by one. We will first make the rational horizon diagram. So you make a circle and you show these 4 points representing the directions: north, east, south, and west. NESW, these 4 points are shown. Now at the center of this circle, we have the zenith. So we can join N and S, we can join W and E. The point of intersection gives us the center of the circle, which is the zenith. So the center of this diagram represents the zenith of the observer. The circumference represents the rational horizon of the observer. Now let's try to put all the given information in this particular diagram. Now they have told us that during morning twilight, the star was bearing south. Now south bearing in this diagram is represented by this line ZS. ZS represents south bearing. The point S is on the rational horizon with altitude 0. The point Z is the zenith of the observer with altitude 90. So our star was bearing south. That means it has to be somewhere on this line ZS. So star bore south with a altitude of 40 degree 20 minutes. So our star, which is on line ZS, has a altitude of 40 degree 20 minutes. Now we know the radius of this diagram is 90 degrees because its center is zenith, the circumference is rational horizon. Every point on the rational horizon is 90 degrees away from the zenith. So the radius is 90 degrees and the altitude of the star is 40 degree 20 minutes. So that means it is 40 degree 20 minutes above the horizon. Now on this line ZS, S point represents the horizon. If you go 40 degree 20 minutes away from it, this is the location. 40 degree 20 minutes away from the horizon, this is the location where the star is.
So we have shown the star's position at the time of morning twilight, and let's mark that position as X. Further, the question says during evening twilight at LST so and so, the same star bore north. So north bearing represented by Zn. The star had a altitude of 13 degrees 08 minutes. So it was 30 degrees 08 minutes from the horizon. Now N point represents the horizon here. So if we go 13 degrees 08 minutes above the horizon, this is where the star is at the time of evening twilight. Now we have the location of the star at the time of evening twilight as well as at the time of morning twilight. It is the same star. Now the same star can be at these two locations, that is X location in morning twilight and X dash location in evening twilight, only in one way. Its declination circle has to pass from both these locations. The star always remains on its declination circle. And there is only one way a circle can be drawn passing from these two positions. How can we draw a circle? The circle can be drawn in this particular way only. So this circle, which is passing from X and X dash, represents the declination circle of the star. Now we are aware that at the center of all declination circles is the pole. So let's mark off the center of this particular circle. The center will be north of Z because you see Sx distance is 4020, which is much greater as compared to Nx dash, which is only 13.08. So the circle is offset to the north. The center will be north of the zenith. And the center of the circle has to be the pole. We are aware that all the declination circles are centered at the pole. Now the star will be moving in this particular direction marked by these green arrows. This is how the star will be moving. We can also show the equinoctial in this diagram. Equinoctial is 90 degree away from the pole. So you go 90 degree away from the pole and this point is the Q point from where the equinoctial is passing, and equinoctial always passes from the west and east points. So this blue color line which you see in the diagram now represents the equinoctial WQE. Now the LHA Aries is obtained from the value of local sidereal time. As I told you, local sidereal time is the westerly R angle of Aries measured from the observer's meridian. And this is in the units of time, 3 hours, 34 minutes and 24 seconds. As I told you, we can easily convert it into angular units by multiplying by 15. So we multiply this LST 334.24 by 15 and we get a value of 53 degrees 36 minutes. So this 53 degrees 36 minutes is the westerly R angle of Aries measured from the observer's meridian. And this is the definition of LHA Aries. In fact, if LST is given to you, if you convert it into angular units, it gives you the LHA of Aries. LHA of Aries is the angle at the pole contained between the observer's meridian and the celestial meridian of Aries measured westwards. And this is exactly what LST is. So multiplying the LST by 15, we get the value of LHA Aries, which is 53 degree 36 minutes. Now let's show this value in our diagram here.
The observer's meridian is represented by PZQS. This particular line represents the observer's meridian. Now LHA Aries is 5336. So from the observer's meridian, if I draw an angle of 53 degree 36 minute, this is where the meridian of Aries would be. So from the observer's meridian, we go in the westerly direction. You see, this is the westerly direction by 53 degree 36 minutes, and it gives us the celestial meridian of Aries. This is the location where Aries is going to be. Any doubts up to here, beta? यस सर। सर ये बोलो डब्ल्यू बेटा। क्यू ये क्या था, मतलब वैसे ये बता दीजिए बेटा सर, यहाँ कोई W लैटिट्यूड नहीं दे रखा ना। okay, WQE is the equinoctial, beta. How did we get point Q? First we identified the pole, and point Q will always be 90 degrees away from the pole. Equinoctial will always be 90 degrees away from the pole. So that is how And we identify Q. pole will Once be you, the center of this circumpolar circle, sir. yes, that's right. Pole will be at the center of the declination circle. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Okay, all right. Moving ahead. बता डब्ल्यू सर, मुझे भी डाउट हो रहा है डब्ल्यू की है। क्या डाउट आ रहा है बेटा WQE में? सर मतलब ये इक्विनॉक्स में तो बोलते सर कैसे कैसे शो करेंगे, मतलब ये 90 डिग्री अवे है सर फ्रॉम पोल टू टू। ओके, इक्विनॉक्शियल कैसे बनेगी? सबसे पहले इस डायग्राम में हमें पोल को आइडेंटिफाई करना है। वो कर लिया बेटा, पोल आइडेंटिफाई हो गया। यस सर। अब पोल से 90 डिग्रीज दूर जाना है। 90 डिग्रीज इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस डायग्राम। 90 डिग्रीज नॉर्थ या साउथ में पोल के जब हम जाएंगे तो हमें क्यू पॉइंट मिलेगा, इक्विनॉक्शियल का क्यू पॉइंट। अब अगर आप पोल से 90 डिग्री नॉर्थ में जाओगे फिर तो आप डायग्राम के बाहर निकल जाओगे, राइट? यस सर। अगर आप पोल के 90 डिग्री साउथ में आते हो, दैट इज वेयर द क्यू पॉइंट लाइज। सो हमने वहां पे क्यू पॉइंट को बना दिया। सो कैन यू मार्क द क्यू पॉइंट नाउ? यस सर। Now once you have Okay. Q point in your diagram, equinoctial always passes from east and west points. So join W, Q, E and you get the equinoctial. Okay. Okay बेटा, सारे Okay. क्वेश्चन में इक्विनॉक्शियल ऐसे ही बनाते हैं हम। सो चलें आगे। तो ये पोल का जो है वो थोड़ा उसका डायरेक्शन इसका पता नहीं चल रहा है, ये इतना नीचे कैसे कर दिया? बेटा हमारे पास सबसे पहले तो डेक्लिनेशन सर्कल आया, ग्रीन कलर का सर्कल, राइट? यस यस सर। हमें उस सर्कल के सेंटर में पोल को बनाना है, ओके सर। right? So you put the pole approximately at the center. Obviously it will be north of zenith. यस सर। Okay, so that's how we identified the pole, beta. ओके सर। सर इसमें डेट नहीं दिया है सर, तो स्टार कैसे फाइंड करेंगे? बेटा अभी करेंगे, होल्ड ऑन, अभी बता रहा हूँ। अच्छा। Now Excuse you me, sir. see, go ahead, beta. Sir, in this question, you have just randomly plotted this Aries, right, sir? Anywhere in the diagram. No, beta, we have not randomly plotted it. We have plotted it as per the LHA of Aries, 53 degree Okay, sir, 36 minutes. From the observer's meridian, right? Yes, observer meridian से 53 degree 36 minute west में हमने एरीज का मेरिडियन प्लॉट किया है। Okay, sir. Okay.
Sir, we इस can diagram find में out the westerly R angle between Aries and star X. Now, when Aries was at this particular location at the time of evening twilight, the Aries was at this particular location and our star was at the location of X dash. So Aries is at this particular location. The celestial meridian of Aries represented by P Aries, and the star is on this particular celestial meridian. The celestial meridian of the star represented by Px dash n. Now we can easily measure this particular angle, the green color angle in the diagram. What is this green color angle? It is the angle at the pole contained between the celestial meridian of Aries and the celestial meridian of the star. And this is the definition of SHA. So the SHA of this particular star can now easily be found. You can see from this point, you can follow the laser pointer, from this point up to this point is 180 degrees. This is the angle between the observer's meridian and his inferior meridian. So this total angle is 180 degrees. The maroon color angle is 53 degree 36 minutes. So the green angle has to be 180 minus 53.36. That gives us the value of 126 degrees 24 minutes. So we get the SHA of this particular star. The SHA of the star is known. Now what we do is, you see we have this NX dash arc known to us. It is 13 degrees 08 minutes. We have the SX arc also known to us. It is 40 degree 20 minutes. And we are aware that from point S to Z is 90 degrees. Z to N is again 90 degrees. So this total N to S is 180 degrees. Now, if I subtract 1308 NX dash and SX 4020 from 180, I can get the diameter of this particular circle. So 180 minus 13 degree 08 minutes minus 40 degree 20 minutes gives me the diameter of this circle, which is XX dash. 126.32. Now, if I divide the diameter by 2, I get the radius of this particular circle. The radius of this circle is Px dash. Now, this radius of the circle which I am getting is basically the polar distance of the star. This is the pole, and point X or point X dash is the star. So Px or Px dash, both representing the radius of the circle, give me the polar distance of the star. Now we know 90 minus polar distance gives us the declination of the star. So once we calculate Px, you see this is the value of Px here. We know pole to equinoctial is 90 degrees. So 90 minus Px gives you the declination of the star, which in this case comes to be 26 degrees 44 minutes. So we get the declination of the star 2644. We get the SHA of the star, which is 126 degrees 24 minutes. With these two values, we can now go into the star information table on page 268 and we can look for this particular SHA. And from there, we find out that this particular star is Alpha, having this given SHA and declination. सर कैसे कैसे वापस एक बार बताना. Ask again, beta. सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा स्टार है? Beta, we will do it from star table on page 268. So that table is given in increasing order of SHA. So you look for a SHA close to 126.24. You have the table, you can just open it and have a look, beta. Yes, sir. 1 minute. 268. Okay.
अगर सर डेट सर दे देगा सर, डेट पे चेक करेंगे हम, और नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ चेक कर लेंगे पीछे। बेटा अगर इन क्वेश्चंस में डेट या मंथ नहीं भी दिया हो देन ऑल्सो इट इज ओके because the SHA and declination of the star changes very minutely over the months. So 126.24 SHA you will find it close to only 1 star. Pekka, yes. सर डेक्लिनेशन का एक बार बताएंगे सर, डेक्लिनेशन कैसे आई? Okay, that's very simple बेटा, जैसे हमने हाँ सर, circumpolar वो में तो किया था. डिफरेंस डब्ल्यू क्यू ई और ये डेक्लिनेशन सर्कल के बीच का डिफरेंस होगा एक्स क्यू, राइट सर? एक्स क्यू, ओके हाँ जी। आपने बेटा सबसे पहले तो डेक्लिनेशन सर्कल का रेडियस निकाला. हाँ जी। ओके px हाँ और जी। px डैश वो रेडियस हाँ आपके जी। पास आ गया. हाँ जी। That radius is the polar distance. 90 minus polar distance gives you the declination. ठीक है सर, ठीक है। So in order to identify a star, if my SHA matches but declination does not match, so can I say that it's the star? No beta, all going well, both of them should be matching. They may not be accurate values exactly as given in the table, but they need to be close. Both of them should be close to the values which are given in the table. Both of them, the SHA as well as the declination. Sir, then declination nearby will do. सर Ask again beta. Declination nearby will do. Nearby means it should be close to the value which is given in the table. It may not be exactly matching, but 2644 north अगर हमारी value आ रही है, the value which is given in the table should be close to this. Actually, like if I get if it is 2644, I get like 20, then will it do? No, it won't do beta. You can have 1 or 2 minutes up and down. Okay, okay, well noted, sir. Thank you, sir. सर माय डाउट इज हमने जो एसएचए लिया है वो एक्स डैश का क्यों लिया, एक्स का भी तो ले सकते हैं हम. Okay, beta, if you look at the question, I'll show you the question. सेम स्टार है ना सर? एग्जैक्टली स्टार तो See, सेम है. the question says during evening twilight at LST 33424. It was at the time of evening twilight that Aries was here, right? यस सर. And at that time the star was bearing north beta. So we have Okay, to got find the that. difference of Aries from the star in the X dash position. You cannot compare it with X. अंडरस्टूड सर, क्लियर. Okay. और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? सर ये एक्स एक्स डैश sir, का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स एक्स डैश की वैल्यू कैसे निकाली? देखो बेटा, फ्रॉम n to s is total 180, nx dash is 1308, sx is 4020. So can you find out xx dash? Yes, yes, I understood. Yes, yes, understood. Okay. Sir, in this diagram, PQ is equal to 90 degree and ZS is equal to 90 degree, right, sir? PQ 90, Z to S is 90. That's correct, beta. Okay. One more question, sir. This बोलो बेटा. you said this morning twilight and evening twilight. So my X test will be in which meridian? Like No beta. आप which meridian means? prime meridian, yeah. No, you forget about the meridians East. बेटा. आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉर्निंग ट्वाइलाइट में स्टार वाज बियरिंग साउथ, एल्टीट्यूड 4020. So point X basically shows the morning twilight location of the star, right? So it should be on the south or on the east? Like it's just a question, a doubt. Beta, when he says that the star was bearing south, it has to be somewhere between Z Okay, okay. and S. The bearing south is Okay, only okay, applicable yes. in this direction, na? Yes, yes, yes. I'm sorry, sir.
सर इसीलिए सर ये साउथ एल्टीट्यूड है, दैट्स व्हाई ऑब्जर्वर्स की जो मेरिडियन है वो साउथ में ही है, करेक्ट सर? बेटा ऑब्जर्वर मेरिडियन तो हमें पता चला पोल को आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक है, ओके, पोल पहले को तो हमें आइडेंटिफाई। बिल्कुल नहीं पता था। हमने सबसे पहले तो स्टार की लोकेशन बनाई, डेक्लिनेशन सर्कल बनाया, तब हमारे पास पोल आया। दैट इज हाउ वी केम टू नो विच इज द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। Okay, and Sir, X otherwise normally if Yes. X location is on the observer's meridian. X dash location is on the observer's inferior meridian. That's correct. Okay. so else normally if they say morning twilight and evening twilight, it comes after sunrise and sunset only, right? Morning twilight will be before sunrise and evening twilight will be after sunset. Yes, sir. Okay, so it will be on the nearby the east-west meridian only, right, sir? Which will be near the east-west meridian, beta? The sun? The sun, sir, The sun will during be twilight. sun can be anywhere, beta. It depends upon the declination of the sun. Okay, well noted. Okay, Acha. it depends on the declination. Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, Can you यहाँ please पे change to जो next slide, sir? Next this slide. LST, sir, conversion of LST to LHA, can we do it by calculator, some shortcut, or we have to just multiply individually, mean seconds, then minutes, then hours? बेटा बिल्कुल शॉर्टकट है। यहाँ पे LST जो है 33424 है। Just type it in your calculator in the degree minute second format and multiply by 15. You will get the answer straight away. Okay, sir. अभी करके देखो कैलकुलेटर में, see if you are getting it. Okay, sir. Yes, sir, getting. Thank you, sir. Okay. और डाउट्स बेटा? Okay, great. So let's move on to the next one बेटा। अगला सवाल देखते हैं। Okay. Okay, sir. Let's now move on to the next question. On 13th of October 1992, in latitude 62 degrees 30 minutes north, star Vega bore 270, and at the same time, an unknown star bore north with an altitude of 34 degrees. Identify the unknown star. We will follow exactly the same approach in this question. That is, we will make the rational horizon diagram and we will feed or input all the information what is given to us in the question in that diagram, and the diagram will give us a lead. So let's put all the information in the rational horizon diagram. We have the rational horizon on the screen now. We can show the NESW points. The center of this diagram represents the zenith of the observer. So you see the Z, the zenith coming up in the center. Irrespective of where the observer is or where the body is, these 5 points NESW on the rational horizon and point Z at the center remain at these locations only. Now in this question they have given us the latitude. The latitude is 62 degrees 30 minutes north. So it tells us that the zenith will be the north of the equinoctial or the Q point. Or in other words, the Q point would be south of the zenith. And we know that the arc ZQ, Z to Q, represents the latitude of the observer, and this in our case is 62 degree 30 minutes. So from the zenith I go 62 degrees 30 minutes south, and this is where the equinoctial would pass, and I will have the Q point. So you see the equinoctial is passing from
Q point, and the equinoctial always passes from the east and west points. So this WQE, which we have on our diagram now, represents the equinoctial for this particular observer. Now, once the equinoctial is there, we can also show the pole. The pole, in this case, the observer is in north hemisphere. So we will have the north celestial pole as our elevated pole or visible pole. And the pole is 90 degree away from the equinoctial or the Q points. So from the Q point, I go 90 degrees away, and this is the point where I have the pole. Let's represent this point as P. We have the pole in the diagram now. Now the next information which the question tells me is that star Vega bore 270. Now in this diagram, the 270 bearing is represented by line ZW. ZW represents 270 bearing. So Vega has to be somewhere on this line. I don't know the altitude of Vega, so I will pick up any random location here and I will put star Vega in this location. So we have the star Vega in our rational horizon diagram now. Now the next information which is given in the question is the unknown star bore north with an altitude of 34 degrees. At the same time, when Vega was sighted, the unknown star was bearing north with the altitude of 34 degrees. Now coming back to our diagram, the ZN line represents the north bearing or 000 bearing. So the unknown star has to be somewhere on this line. Its altitude is given to us as 34 degrees. Now point N is on the horizon. Our star is 34 degrees above the horizon. So from point N going 34 degrees above the horizon, this is where the unknown star is. Let's mark the unknown star as X. So you can see now that all the information what was given to us in the question has been fed in the rational horizon diagram. Now what we do next is I have star Vega in my diagram, and I have the pole, I have the zenith. So I'm going to draw the celestial meridian of star Vega. Its celestial meridian will originate from the pole and it will pass from star Vega extending downwards. So let us show the celestial meridian in the diagram. The maroon color line which you see from P going up to Vega and going further is the celestial meridian of Vega. Now concentrate your attention to the arc P to Vega. P to Vega. Now this arc is basically the polar distance of Vega. Polar distance of Vega. And we know that the polar distance is equal to 90 minus declination. You see, from Vega to the equinoctial, this is the declination, which I'm showing with the help of the laser pointer now. This is the declination of Vega. And we know equinoctial to pole is 90 degrees. So P to Vega has to be 90 minus declination of Vega, and it is called as polar distance. Now we have the date 13th October 92, and we can get the declination of the Vega from the nautical almanac. So once you do 90 minus that, you get the polar distance. This is the value of the polar distance which will be obtained. So we have the Papa Vega side, P Vega side known to us. Now have a look at the PZ Vega triangle. Okay, I have named it as Vega, otherwise this is the PZX triangle. So in this triangle, I'm showing that triangle with the help of the laser pointer now.
Now in that triangle you see angle Z is a right angle because star Vega is at 270 bearing. The pole is north of the observer. So the angle Z is 90 degrees in this particular diagram. And in this triangle, we know the side PZ, Papa Zulu side, is known to us. It is the co-lat of the observer, or 90 minus latitude of the observer. The latitude is 60 to 30. So 90 minus that is the side Papa Zulu PZ. That's why it is shown with a green tick. Now we also have the Papa Vega side, which is the polar distance of Vega, 51 degrees 13.1, which we calculated found earlier. Now you see in this triangle Papa Zulu Vega, PZ Vega, it's a spherical triangle. All the three sides are great circles, and it has a speciality. Angle Z is a right angle. So we can apply the Napier's rule in this triangle and we can find out anything else using these two known values. So I will apply the Napier's rule in this triangle, and what I'm going to find out is this angle P. Let me show that with the arrow in the diagram. This angle P is what I'm going to find out. So using Napier's rule, using the two known parts, I'm going to find out this angle P. Now this angle P is basically the LHA of star Vega. It is the LHA of star Vega. Now the LHA of star X, if you look carefully, the star X is on my inferior meridian. It is on the other side of the pole. P to N is the inferior meridian of the observer. So anybody on the inferior meridian, its LHA is 180 degrees. So LHA of the unknown star is 180, and the LHA of Vega has been found. This is known to us now. So I can, from this information, find out this angle, which I am highlighting with the laser pointer. And what is this angle? This angle is November Papa Vega. This is the angle which I am talking about. November Papa Vega. And what is this angle here? This angle is LHA of the unknown star minus LHA of Vega. Go ahead, beta. सर एक डाउट था सर. बोलो बेटा. सर ये जो आप बोले ना सर कि पापा जोलू एंड एक्स दैट इज वेगा, उसमें एंगल 90 Z हुआ सर. तो नेपियर से हमें पी मिल गया, एंगल पी इनसाइड वाला जो पी जेड एंड वेगा का. राइट. देन उसके बाद में सर उसको 180 से माइनस क्यों कर रहे हैं सर? बेटा उसको 180 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें नवंबर पापा वेगा एंगल चाहिए. ओके ओके ओके. और वो क्यों चाहिए वो मैं अभी बता रहा हूँ. ओके सर. ओके बेटा. और कोई डाउट यहाँ तक? Okay, great. Let's move ahead. So we have basically obtained this angle November Papa Vega. Or you can say it is the difference of our angle between Vega and the unknown star. Angle at the pole contained between celestial meridian of Vega and celestial meridian of the unknown star. So it is the difference of our angle between Vega and this particular star. Now once I know this angle, I know this is the difference between SHA of the star X and the SHA of star Vega also, because this is the R angle, difference of R angle between the unknown star and Vega. So SHA is also a R angle. So whatever is the SHA of Vega plus this angle is going to give me the SHA of the unknown star.
So what I am going to do now is I will check the SHA of Vega on 13th October 1992 from the almanac. To the SHA of Vega, I will add up this particular angle and I am going to get the SHA of the unknown star. So we will find out the SHA of the unknown star. Now, to identify a star, along with SHA, we also need its declination. So let's now see how do we find out the declination of the unknown star. Concentrate your attention on November to Papa. November to Papa is the elevation of the pole or altitude of the pole. Now we know that the elevation of the pole or altitude of the pole is equal to the latitude of the observer. And we know the latitude is 62 degree 30 minutes. So November to Papa is equal to 62 degrees 30 minutes. November to X-ray, which is the true altitude of the star, is 34 degrees 00 minutes. So I can now easily find out the difference between them. It is going to give me Papa X-ray, PX. So in this case, the PX is going to be 28 degrees and 30 minutes. It is NP minus NX. NP equal to the latitude is 6230. NX, the altitude of the star given in the question, is 34 degrees, giving us Papa X-ray PX as 28 degrees 30 minutes. Now, if you look carefully, Papa X-ray PX is the polar distance of this particular star. Now, we know polar distance is 90 minus declination. So once we have the polar distance, 90 minus the polar distance is going to give us the declination of the star. So we can obtain the declination of the star. Since it is the polar distance from the North Pole, the declination will have a northerly name. It is close to the North Pole, so the declination of the star is north. So once we find the SHA and declination, SHA comes out to be 195.33 and declination comes out to be 61 degree 30 minutes. We can go to the star information table on page 268, look for this SHA 195.33, match the declination, and we can identify the star as Dubhe. So this is how we solve this question. So used the same principle, put all the information in the rational horizon diagram, applied the spherical trigonometry, Napier's rule, and we were able to find out the SHA and declination of the star, identifying it. So now you can go ahead with your doubts, beta. Have a good look. Let me know your doubts coming in. सर ये P जो calculate किया था that was LHA, no? That was LHA of Vega, beta. LHA of Vega. So 180 minus LHA of Vega will give us LHA of the unknown star. No. Sorry, it that will will give be you the R angle difference between Vega and the unknown star. R angle difference. Yes, sir. So, sir, ये SHA, how did it come in the picture? Okay, I'll show you. मैं यहाँ पे ना आपको नई डायग्राम बना के दिखाता हूँ. Just a minute. So this difference of our angle will be same for SHA, LHA, GHA, whatever we consider, right, sir? That's Because right, the beta. It position will is be the same. It will be the same. Okay, let me show you. इसी डायग्राम में अगर हम okay, let's remove this. Let me show Aries in this diagram. Let us assume कि जो Aries है वो यहाँ पे है. Is somewhere here. Yes, sir. Can you see Aries now? Yes, sir. Okay. If Aries is here, beta, SHA of Vega is going to be this angle. Correct. And SHA of the star, unknown star,
is going to be this yellow color angle. Yes, sir. Oh, And the okay. difference between SHA of the star and SHA of Vega is going to be this particular angle only. Yes, okay. राइट बेटा. सो ये Yes. हमने फाइंड आउट कर लिया है एंगल, एंड इस एंगल को हमने वेगा के SHA में ऐड कर दिया. वी गॉट द SHA ऑफ द अननोन स्टार. Yeah, okay. Clear. ओके ग्रेट. और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? सर आवर एक एंगल बात में नहीं आ रहा सर. वन बाय वन बेटा, आस्क अगेन. सर आर एंगल डिफरेंस से एसएचए कैसे आ रहा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार और बताएंगे सर. ओके हाँ बेटा, ध्यान से समझो, दोबारा बता रहा हूँ. पे योर अटेंशन. बेटा मैंने ना इस डायग्राम में सबसे पहले तो एरीज को शो कर दिया. एरीज इज हियर. ओके बेटा, एरीज ओके हियर. सौरभ, आर यू ओके विद एरीज हियर? यस सर, यस सर. ओके. अब बेटा वेगा का SHA मैं शो कर रहा हूँ. ये जो पिंक कलर का एंगल है, दिस इज SHA ऑफ वेगा. आर एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ एरीज एंड सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ वेगा. दिस इज SHA ऑफ वेगा, राइट? यस सर, एसएचए ऑफ वेगा. ओके. Right. What will be the SHA of the unknown star? I am showing it by a blue color angle now. This is going to be the SHA of the unknown star, the blue color angle. Correct, beta? Yes sir, from Aries to unknown star. Okay, okay. Okay. Now, what is the difference between the SHA of unknown star and the SHA of Vega? It is this yellow color angle. Yes. This is what we have found and added to Vega to get the SHA of the unknown star. अगर बेटा मैं पिंक कलर के एंगल में येलो कलर का एंगल ऐड कर दूं तो ब्लू एंगल आएगा. हाँ, करेक्ट. So that will पिंक give you the कलर का SHA of एंगल, unknown star. that is correct. Okay. समझ गया बेटा? और डेक्लिनेशन कैसे लिया हमने? ओके. SHA में तो डाउट नहीं है आप किसी को बेटा? सर एक मिनट, इसको थोड़ा बनाता हूँ सर, नहीं बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा. बना लो. एक डाउट है, अगर एरीज हमारा सर W एंड S के बीच में रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा. मैं बना के दिखा देता हूँ अभी. सर वो SHA सर अननोन स्टार का वो कैसे निकाल रहा है सर? आवर एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? बेटा इस डायग्राम में ये पिंक कलर का एंगल देख रहे हो? हाँ सर, वो SHA ऑफ वीगा है. SHA ऑफ वेगा है. ब्लू कलर का एंगल भी देख रहे हो बेटा? डेट SHA ऑफ अननोन स्टार. वेरी गुड, वो SHA ऑफ अननोन स्टार है. ये येलो कलर का एंगल देख रहे हो बेटा? यस सर. ये भी दिख रहा है? ओके. अगर मैं पिंक और येलो को ऐड कर दूं तो ब्लू आएगा? हाँ सर. आ जाएगा पक्का? यस सर. ओके. पिंक इज SHA ऑफ वेगा, येलो इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम द डायग्राम. दोनों को ऐड करके हमने अननोन स्टार का SHA ऐसे ही निकाला है. ओके ओके. ओके बेटा. सौरभ नोट कर लिया? इरेज कर दूं? यस सर. ओके ऑल राइट. अब था डाउट डेक्लिनेशन में. बेटा डेक्लिनेशन बहुत आसान है. पापा टू नवंबर इज इक्वल टू अवर. समझ गए. पोलर डिस्टेंस. वेरी यस गुड. यस. एक और डाउट आ रहा था कि अगर एरीज वेगा और एक्स के बीच में आ जाए तो क्या होगा. राइट बेटा, यही डाउट था ना? यस सर. तो मैं एरीज को बीच में बना देता हूँ. ये लो, ये एरीज मैंने ना बीच में बना दिया बेटा. यहाँ बना दिया एरीज. ओके. अब बेटा अगर एरीज यहाँ पे है तो पहले मैं SHA ऑफ वेगा बनाता हूँ. ये होगा SHA ऑफ वेगा, पिंक कलर एंगल जो मैंने अभी बनाया है. करेक्ट बेटा? यस सर. वेरी गुड.
अगर इस SHA में मैं ये येलो कलर का एंगल ऐड कर दूं, दिस येलो कलर एंगल, तो मुझे SHA ऑफ द अननोन स्टार मिल जाएगा. इट विल बी मोर देन 360. सो ऑब्वियसली कोई भी आर एंगल 360 से बड़ा होगा तो आप उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करोगे, अल्टीमेटली ये बचेगा. ओके सर. करेक्ट. सो SHA ऑफ Yes, sir. वेगा में जब ये डिफरेंस आप ऐड करोगे तो आपको SHA ऑफ द अननोन स्टार फिर भी मिलने वाला है. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके. और कोई डाउट सर इसमें बेटा? ये SHA बोल. वेगा का 13 अक्टूबर से लेंगे ना जो टेबल हाँ में? बेटा, वी विल पिक इट अप 13 अक्टूबर को. अक्टूबर मंथ के लिए आप ले सकते हो या आप डेली पेज से भी ले सकते हो. तो जैसे 80 डिग्रीज है सर अभी यहाँ पे वेगा का, 80 डिग्रीज 49. राइट बेटा. तो 180 माइनस SHA ऑफ वेगा, दैट विल बी SHA ऑफ दिस अननोन स्टार. नो 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 नो. आपने वेगा का SHA निकाला, वो 80 डिग्रीज है, करेक्ट? यस सर. ओके. इसका मतलब ये है कि अगर एरीज यहाँ पे है तो 80 डिग्रीज एरीज के वेस्ट में वेगा है. दिस इज व्हाट इज SHA ऑफ वेगा, 80 डिग्रीज. ओके. अब आपको ये स्टार का SHA कैसे मिलेगा? ये जो एंगल आपने निकाला है बिटवीन एरीज एंड बिटवीन वेगा एंड स्टार एक्स, ये एंगल निकाला है ना हमने बेटा? यस सर. इसे 80 में ऐड करोगे तो मिलेगा भाई. सर वो SHA जो है, SHA ऑफ अननोन स्टार 195.33.6 आ रहा है. बिल्कुल सही आ रहा है बेटा. ये देखो 195.33 लिखा है मैंने. हाँ, तो अभी इसके बाद सर नियरेस्ट SHA देखना है क्या? इसके बाद बेटा पहले तो डेक्लिनेशन निकालनी है, वो भी निकल गई. हाँ, ये सर 90 माइनस पोलर PX डिस्टेंस. राइट. सर बट PX कौन सा PX लेंगे सर? अब बेटा एक ही PX है डायग्राम में. ये है PX, ये रहा 2830. एक ही PX है और तो कोई PX है ही नहीं. अननोन स्टार का लेना है. नेचुरली बेटा अननोन ही तो ढूंढ रहे हैं ना. वेगा का तो पता है हमें, वेगा का तो दे रखा है एल्मनैक में. ये सर. ओके 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 समझ गया सर. ओके ओके. ये सर. ओके ग्रेट, समझ गए. और बताओ बेटा, और डाउट आ रहा है? सर आंसर में हम 13 अक्टूबर का ही SHA डिक्लेरेशन लिखेंगे डूबे का, या फिर यही लिखेंगे बिकॉज मैच तो नहीं हो रहा है? नहीं बेटा, देयर विल बी ऑलवेज ए स्लाइट डिफरेंस. जब भी कभी आपको कोई स्टार आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, जो SHA और डेक आप निकालोगे और जो SHA और डेक आपको टेबल में मिलेगा या डेली पेज में मिलेगा, उसमें स्लाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं. रीजन फॉर दोज डिफरेंसेस आर, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ आवर DR पोजीशन एंड देयर कैन बी ए स्लाइट एरर. तो आपने इसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो टेबल में देखनी है. आंसर में आप वही लिखोगे जो आपको कैलकुलेशन से मिला है. तो सर यहाँ तो डेट मेंशन सर, so we can see the daily pages ना for star. Yes, you can check it from daily pages. बट जब भी आप कभी स्टार आइडेंटिफाई करते हो बेटा, आप SHA से उसे आइडेंटिफाई करोगे. इट विल ऑलवेज बी इजी टू रेफर टू द स्टार टेबल ऑन पेज 268, बिकॉज वो जो टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SHA में दिया हुआ है. जो डेली पेज है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. आपको डेली पेज में 1 मिनट लगाना पड़ेगा टू चेक कि ये SHA कहाँ आ रहा है. और हो सकता है ऐसा कोई स्टार वो आपको फाइंड करने के लिए दे दे जो डेली पेज में हो ही ना. वहां तो सिर्फ 57 स्टार्स है ना. Yes sir. So always better to go to the star table on 268. सर अगर SHA हम लोग ना निकालें सर, सिर्फ डिक्लेरेशन निकालें तो उतना हमें मार्क्स मिलेगा सर? नहीं बेटा, फिर आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब भी कभी स्टार आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, SHA भी और डेक्लिनेशन भी. ओके 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 सर. ओके सर एक क्वेश्चन था, थोड़ा ऑफ टॉपिक है. सर अगर लोअर ट्रांजिट बोला जाए तो लोअर ट्रांजिट वुड बी इंफीरियर मेरिडियन और Yes. अपर इंफीरियर मेरिडियन. It will be inferior meridian बेटा.
Upper transit is observer's meridian, lower transit is observer's inferior meridian. Okay, sir. Okay, clear, sir. Okay. सर एक बार फिर से बोल दीजिए क्या हुआ? Upper transit is observer's meridian, and Yes, lower that's transit right. is inferior meridian. Okay, sir. That is right, बेटा. ये मैंने सर्कमपोलर में आपको कराया था बेटा, मैंने वो डायग्राम भी बना के दिखाई थी एक. हाँ सर, लोअर हमारे पास और अपर हमारे पास. हाँ सर, वो डाउट इसलिए Exactly. आ रहा है बिकॉज सर हमारे इंस्टीट्यूट से हमें एक नोट्स मिले हैं, वहाँ पे वो जो ट्रायंगल बनाया रैशनल होराइजन का, सॉरी सर्कल बनाया, वो सर गलत है, मतलब वो हिसाब से देखा जाए तो फिर वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है. मैं आपको भेजता हूँ सर, ग्रुप में भेजता हूँ. ओके, ऑल राइट. अगर गलत है तो मत भेजो, एवरीबडी विल गेट कंफ्यूज्ड. सेंड इट टू मी देन. नहीं भेजो, अच्छा रहेगा. हाँ, गलत वाला मत भेजना. सर ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, मे बी मैं गलत समझ रहा हूँ, वो भी हो सकता है. हाँ, मुझे भेज दो, आई विल हैव ए लुक. नो इश्यूज. सर बेटा, हियर और कोई? एक्चुअली हाँ. यहाँ पे दो स्टार्स आ रहे थे सर, 194 SHA के अराउंड, सो वी विल कंफर्म बाय डिक्लेरेशन हियर बिकॉज़ SHA Yes. is a bit confusing, so that's why we Exactly. also need declaration, right sir? अब बेटा, वाई आई हैव टोल्ड यू कि ये दोनों को निकालना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बोला वैल्यूज़ एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं. सो इट इज़ पॉसिबल कि आपने जो SHA निकाला है दैट में कम बिटवीन टू फिगर्स, somewhere between two figures. So then you will get confused which one should I pick up. So that is where the declination helps you. Only one of those stars declination will be matching, the other one will not be matching. So that is why you need both of them. In previous question also was the same issue sir, SHA was approximately matching and declination made the difference. Exactly, beta. That's right. So I can close this out now, beta. ये clear है? सर बस सर, एक बस ये था, लास्ट डाउट है. LHA is measured westerly from where to where sir? Okay. LHA is measured, it is the angle at the pole contained between celestial meridian of the observer. In this diagram, it is PZQS to the celestial meridian of the body measured westwards. ये है westerly direction बेटा. Looking from north pole, it is clockwise. ठीक है सर, थैंक यू सर. सर एक लास्ट डाउट है, जो SHA x माइनस SHA ऑफ वेगा है, ये इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी या फिर मैं पहले SHA ऑफ वेगा निकालूंगा और देखूंगा वो मेरे रैशनल होराइजन डायग्राम में वो कहाँ लाई कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग एंगल प्लस No, माइनस no, करूंगा. this will always be correct बेटा. You don't need to find SHA of Vega. This will always be correct. आप वेगा के SHA में जब ये एंगल को ऐड करोगे तो आपको हमेशा स्टार का SHA मिल जाएगा. ठीक है सर, मतलब मैं मेमोराइज कर लूंगा. But it may change from question to question. You cannot you will have to see. हो सकता है किसी क्वेश्चन में डायग्राम बेटा अलग भी बन जाए. हाँ सर, वही मैं पूछ रहा हूँ. अदरवाइज तो फिर मुझे पहले SHA ऑफ वेगा निकालूंगा और फिर मैं देखूंगा वो उसके मतलब वेस्टर्ली एंगल होता है तो उसके ईस्ट में कहाँ लाई कर रहा है और कितने डिग्री है उसके अकॉर्डिंग फिर अप्रोक्सीमेट मैं कैलकुलेट करूंगा. If you get such a question and you are having a doubt, just share it with me if you get such a question. Okay sir. सर एक चीज और पूछना था. बोलो बेटा. सर ये क्वेश्चन में वेगा के अजीमत जो है, मतलब बियरिंग जो है वो 270 दिया हुआ है सर, तो Yes. मतलब वो प्राइम वर्टिकल सर्कल पे आ रहा है. Yes. ना सर, ऑब्जर्वर के प्राइम वर्टिकल में आ रहा है सर. अगर ये 280 होता देन हम लोग कैसे पीरियड सॉल्व करते हैं सर? उसमें तो कोसाइन चाहिए ना. बेटा उस केस में ना कुछ ना कुछ और चीज हमें जरूर दी होती. उस केस में समथिंग एल्स वुड बी गिवन टू अस. उस केस में वो हमें वेगा का एल्टीट्यूड दे देते. ओके ओके ओके. सो देन यू विल गेट दिस थर्ड साइड. कोसाइन आ जाए. हाँ, तो फिर हम कोसाइन फार्मूला लगा के निकालते हैं. ओके ओके. ओके, ग्रेट बेटा, गुड. क्लियर है? अब बंद कर दूं इसे बेटा? यस सर. तो सर एक डाउट है सर, यहाँ पे जो है वो सर 90 डिग्री नहीं है ना? आस्क अगेन बेटा. सर नहीं बेटा, योर वॉइस इज गेटिंग ब्रोकन. स्लोली स्पीक, लिटिल लाउडली.
the distance between P and N is not equal to 90 degrees. क्योंकि तो वो I relevant didn't get you complete, beta. Ask again. सर मैं पूछ रहा था कि जो distance between P and N P and N in this diagram not equal to 90 degrees. Distance between P and N. It is not 90, beta. The distance between P and N is known as the elevation of the pole or altitude of the pole. It is always equal to the latitude of the observer. So इस केस में latitude is 60 to 30. So P to N is 60 to 30. That means equinoxial is a downside of this rational horizon. In this case, one Right. side is upper and other side is below the rational horizon. No, I didn't get you again, beta. क्या कहना चाहते हो last point में? Here this WQE is the upper Yes. part of the equinox, and because Yeah. due to elevation, you cannot see the other side of the equinoxial. Yes. So Okay, I got it now. मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखा देता हूँ बेटा. अगर आप इसका दूसरा साइड बनाओगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा. It'll go like this and it will come up to here. ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये सारा का सारा हमारी होराइजन के नीचे है. ओके, इसे हम शो नहीं करते हैं अपनी डायग्राम में. हम सिर्फ वो वाला पार्ट शो कर रहे हैं जो हमारी होराइजन के ऊपर है. okay. ओके Okay. ओके बेटा, ग्रेट. Sir, in such type of question, there is one typical type of question where we are asked to find the period of, for example, nautical twilight, sir. Right. Right. Sir, that type of question will also be solving by the same principle, sir. एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल बेटा. मैंने ना आज आपको एक असाइनमेंट भेजी है, दैट इज द असाइनमेंट नंबर 4. उसमें से मैंने वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स, उसके सोल्यूशन भी मैंने भेज दिए हैं. उनमें एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. उसमें ऐसा भी एक सवाल है जो आप पूछ रहे हो. सो जस्ट ट्राई आउट, प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, and if you get stuck, see the solution. If still doubts are there, I'll cover them up in the class. Okay, sir. Okay. So बेटा जो Sir, असाइनमेंट मैंने भेजी है 12 ऑनवर्ड्स आप आज कवर करोगे. और जो 1 to 12 वाले क्वेश्चन हैं, 1 to 11 वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेलर मैग्नीट्यूड, द कॉन्सेप्ट ऑफ केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड चार्ट कंस्ट्रक्शन. ये तीनों टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो इन दिस नेक्स्ट क्लास ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो यू कैन लीव अप टू नंबर 11, डू 12 ऑनवर्ड्स. सर नेक्स्ट क्लास Sir, एज next पर class- शेड्यूल होगी कि कैसा? इट विल बी एज पर शेड्यूल बेटा. सर एक दिन मिस था ना परसों कल का, तो अभी वो शेड्यूल कल होगा क्या क्लास? नहीं बेटा, नहीं, कल नहीं होगा. दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड. हमारी अभी 2 क्लासें जो है वो पेंडिंग है. सो इफ वी आर नॉट एबल टू कवर अप द सिलेबस इन दोज 2, देन जो स्पेयर डेज है ना बेटा शेड्यूल में, उन स्पेयर डेज में पिकअप करेंगे. ओके सर. सर एक अभी ले लेते तो पूरा कंप्लीट हो जाता, तो फिर रिवाइज के लिए टाइम बेटा ज्यादा ले नहीं मिलता. सकता. द शेड्यूल नहीं, जो sir. है वो इज चौक के ब्लॉक. बट यू डोंट कार्गो का है क्लास. राइट, सम पीपल हैव द कार्गो क्लास, सो कैन नॉट सेट. ऑप्शन होता तो मैं बीच में ले लेता बेटा. सर ये Sir, log out कर प्लॉटिंग सकते वाला हैं? एक पास पेपर से क्वेश्चन अलग ग्रुप में सर. ओके, लेट मी हैव अ लुक. यू हैव पुट इट ऑन द जीसी ग्रुप. का, सॉरी जीसी का सर. डाउट सर लॉग आउट कर सकते हैं सर, आज का टॉपिक खत्म हो गया तो. हाँ बेटा, टुडेज टॉपिक इज क्लोज्ड आउट. ओनली अगर कोई डाउट्स हैं देन यू कैन स्टे कनेक्टेड, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द टॉपिक इज आउट. आपने जो मैंने असाइनमेंट आज भेजी है 12 ऑनवर्ड्स, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर. इफ यू गेट स्टक, टेक हेल्प फ्रॉम देयर. And next class I'll cover up those doubts, and number 1 to 11 that also will cover up in the next class.
Okay, thank you so much. Thank you, sir. See you. Okay, सर बेटा एक क्वेश्चन था सर, एक स्टार का जैसे मैग्नीट्यूड दे रखा है, स्टार एक्स मैग्नीट्यूड इज 25 टाइम्स ऑफ स्टार वाई, whose magnitude is 2.4. नेक्स्ट क्लास ठीक है सर, ठीक है, ओके। विल कवर दिस सर अप। सर एक क्वेश्चन अभी मैं डाला हूँ सर, वो देखिए ना। अभी देख रहा हूँ बेटा। आई एम गोइंग टू द ग्रुप नाउ एंड लुकिंग एट द क्वेश्चन व्हिच यू हैव पुट। जस्ट गिव मी अ मिनट। सर आप एक्स मीडियन का बताने वाले थे, एक्स मीडियन का। हाँ बेटा, इसके बाद ओके सर, मतलब सर आप ओके सर आपने एक कहा था मिनट बेटा। के टाइम में बता देंगे। हाँ हाँ, मैं एक्स मेरिडियन बताता हूँ बेटा। लेट मी हैव ए लुक हियर। ओके Vessel makes a departure from a position so and so northeast of Taiwan, bound for Port San Luis, California. Most direct route by GC takes the vessel into winter load line, whose southern boundary is 35. Vessel is to follow the shortest route that does not enter winter load line until the vessel is at winter displacement. At departure, the vessel was loaded to summer marks, which required consume 285 tons. ओके अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेट मी शो यू। अब सबसे पहले तो आप बेटा देखोगे कि ये 285 टन जो है, यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट इन हाउ मेनी आवर्स? करेक्ट, 27 टन पर डे आपकी कंजम्पशन है। सो आपको यहाँ से ड्यूरेशन मिल जाएगी। करेक्ट बेटा? यस सर। एंड आपकी स्पीड जो है 15.5 है। आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा। सो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट दैट डिस्टेंस। ओके सर। अब बेटा इसका जो डायग्राम बनेगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो हमारी इनिशियल पोर्ट है वहां से हम एक लिमिटिंग लैटिट्यूड पे जा रहे हैं। दिस इज 35 नॉर्थ और हमारा लिमिटिंग लैटिट्यूड भी 35 नॉर्थ है। यस, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक। ये हमारा लिमिटिंग लैटिट्यूड है और ये हमने एक जीसी ट्रैक फॉलो करना है। इसकी डायग्राम कुछ कुछ ऐसे बनेगी बेटा। इनिशियल पोजीशन ए, कैन यू सी दैट व्हाट आई एम मेकिंग? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें बेटा आपके पास ये ए टू, लेट अस कॉल दिस पोजीशन एज एक्स। ये ए टू एक्स का डिस्टेंस आ गया आपके पास, राइट? और आ जाएगा सर। पी टू एक्स ये भी आपके पास है। इट इज बेसिकली द कोलैट ऑफ योर लिमिटिंग लैट। एंड पी टू ए भी आपके पास है। इट इज द कोलैट ऑफ द इनिशियल लैट। अब इस ट्राइंगल में जो एक्स पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स नहीं बनेगा बेटा। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। आप इस ट्राइंगल में सबसे पहले तो ये पोजीशन निकालोगे, एक्स पोजीशन निकालोगे आप। वो कैसे निकलेगी? इसका लॉन्जिट्यूड जो है आपको एंगल पी से मिल जाएगा। सो दिस इज द सेम डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट कर रखा है। इतना डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, आप लिमिटिंग लैटिट्यूड पे पहुंच गए। ओके, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, देयर इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर। नो, नॉट दिस वन। सर पहले वन डे हम लोग पैरेलल सेलिंग किए ना सर, उसके बाद में जीसी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें नहीं है वो पैरेलल पहले सेलिंग GC वाला है। क्वेश्चन नहीं है ये। पहला GC जीसी है, डायरेक्ट जीसी कर रहे हैं वो। Okay, let me have a look at this beta. Let me make a diagram. I'll post it on the group. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, let me have a look. इसमें और कॉन्सेप्ट यूज होगा। जी जी। ओके, एक और क्वेश्चन आपने पोस्ट किया है। लेट अस सी दैट। ओके, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर दिस वन। ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। ओके सर, ओके।
Okay, सर ये ये declination SHA concept है. Has it come in past papers anytime? Yes, sir. आया हुआ है. Okay, I'll tell you. This I'll tell you in the last SHA declination combo. सर सर बोलो बेटा. सर ये ऑब्लिक्विटी तक तो समझ में आया सर, बट एसएचए कैसे निकालें सर, वो तो नहीं समझ में पड़ रहा. ऑब्लिक्विटी तो समझा सर मैं, मतलब मीन सन का पाथ और इक्विनॉक्शियल का पाथ जो है उसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है सर, अपने को एंगल दिया हुआ है. मैं समझा दूंगा बेटा. Hold on. Keep it to the last. अच्छा अच्छा ओके. Okay, keep it to the last. मैं ये last में समझाऊंगा आपको. This is a typical question, different question. ओके सर ओके. Okay, all right. So are we done for today बेटा? सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी. सर LST से जब हम LHA निकाल रहे हैं, सो आर का टाइम वाला वो हमेशा 15 डिग्री रहेगा. इट हैज नथिंग टू डू विद द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, जो 360 से 23 आवर्स 56 मिनट्स वो उससे डिवाइड करते हैं, तो इट गिव्स अबाउट 15 डिग्री मिनट्स. इट हैज It will नथिंग टू डू विद always be दैट. 15. It will always be 15. ओके, ऑलराइट. ओके, उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ. बिकॉज बेटा आप एरीज को ही कंसिडर कर रहे हो और एरीज का ही रेट है. सो एरीज इज गोइंग टू कवर 24 साइडेरियल आवर्स 360 डिग्रीज. ओके, क्योंकि जब एरीज को कंसिडर करोगे तो 24 साइडेरियल आवर्स आएंगे. जब सन को कंसिडर करोगे तो 24 सोलर आवर्स आएंगे. 24 सोलर आवर्स will be with the rate of the sun 15 degrees per hour, and 24 sidereal hours will again 24 360 की रेशो दोनों केसेस में सेम रहने वाली है. Okay, so it has nothing to do कि actually it is covering in 23 hours 56 minutes. No. Okay sir. Okay बेटा, done. सर Very एक्स good. मीडियन के बताने. हाँ, एक्स मेरिडियन. ओके, अभी बता रहा हूँ बेटा. सर एक चीज पूछनी थी, ये एक्स मेरिडियन की जो जो हम लोग डिफरेंस करते हैं वो एल डिफरेंस डी से भी निकाल सकते थे ना हम लोग? बेटा वो अप्रोक्सीमेट मेथड है, उसमें एरर आ जाती है. सो आई वुड रिकमेंड ओनली डू इट इन इमरजेंसी. ओके ओके, उसमें आपको 5 से 7 मिनट तक की एरर आ सकती है. ओके सर. ओके ओके, अब बेटा देखो एक्स मेरिडियन टेबल कैसे रेफर करने हैं. सबसे पहले आप टेबल 1 में जाओगे. ओके, लेट एंड डेक सेम नेम के लिए अलग पेज है, लेट एंड डेक डिफरेंट नेम के लिए अलग पेज है. अज्यूम करो कि आपको डेक्लिनेशन दे रखी है 40 डिग्रीज, लैटिट्यूड दे रखा है 10 डिग्रीज. आप टेबल में एंटर कर गए. ये दोनों वैल्यूज के साथ आपको टेबल में जो वैल्यू मिल रही है वो है ये. कितनी वैल्यू है बेटा? 2.96. 2.96. आपने ये वैल्यू यहाँ से पिक करनी है. ये वैल्यू को फैक्टर ए बोलते हैं. देखो यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर ए. ओके सर. इस वैल्यू के साथ आप एंटर करो टेबल 4 में. आई एम गोइंग टू टेबल 4 नाउ. ओके सर. ये हम टेबल 4 में आ गए बेटा. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो इट विल बी बेटर. ये टेबल 4 आ गया बेटा. हमारी वैल्यू आई थी 2.96. ओके, अब टेबल 4 में आप देखो ये फैक्टर ए की वैल्यू जो है ना यहाँ लिख रखी है 30 25 ऐसे जा रही है ये. देन हियर 6 5 4 3.5. हमारी जो थी 2.96, इट इज़ वेरी क्लोज टू 3.0. ओके, दिस इज 3.0. इसके आगे यहाँ इन्होंने लिख रखा है 32. व्हाट इज दिस 32? दिस इज मिनट्स ऑफ टाइम. So 32 minutes is your X meridian limit. Okay. Okay, beta, as simple as that. Okay. समझ गए? Yes sir, समझ गए. Okay, all right. Thank you.
तो इसमें Okay, इंटरपोलेशन करना होता है beta, इंटरपोलेशन if you get time, do it. If you don't get time, just mentally interpolate, or you can pick up the nearest value also. It will give you more or less a accurate answer. ओके थैंक यू बाय बाय गुड नाइट Okay, beta. All right. So we call it off for today, and I'll see you in the next class. Thank you, sir. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. Good night, beta. Bye bye. Good night, Thanks. sir. Good night.